हॅलो. हॅलो. येस मॅम. अरे कसे आहे, म्हणजे कोण आधी देणार आहे, काही लिस्ट वगैरे केली का तुम्ही? मतलब हा मॅम. कशी आहे लिस्ट, सांग ना. स्टार्टिंगला भावना मॅम, हम्म भावना राजपुरोहित मॅम, हम्म त्याच्यानंतर विशांगी मॅम फायनल हम्म. इयर. मॅम म्हणजे अगोदर जे अरेंज केलं होतं ना त्याच्यानुसार आम्ही नाव घेणार आहे. तुम्ही लास्टला एंट्री दिली त्याच्यामुळे तुमचं लास्ट आहे. ठीक आहे चालेल. चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही, चालेल. Sir, can I start? Ma'am? Yes, start. Good evening, everyone. Myself, Mayuri Levte from second year. Today, we are joined here for the Student Club Abhivyakti. These events helps to encourage the courage and confidence of the student. Sometimes we cannot put our own opinion in front of teachers, friends, but this is a better chance to put our own opinion in front of teachers and all. Now we have to start the program. Our first participant is Bhavna ma'am from final year, and her topic is environmental impact, and time is 4 minutes.
I invite to Bhavna ma'am to speak their words. Good afternoon, all. Am I audible? Yes, start, Bhavna. Yes, ma'am. Good afternoon, all. My today's topic for Abhivakti is Environmental Impact Assessment 2020. So we are all little bit we are not familiar with this topic. So first, I'm going to give little bit background, then EIA 2020, and then what is our role in it. Okay. So after the 1980, the Bhopal gas tragedy happened. After that, our government realized that in India, the environmental law are not impactful. So in 1986, the India came up with a new law, that is the Environmental Protection Act, in which there was a one assessment step, or we can say there was one rule, that rule name is in Environmental Impact Assessment, EIA. So वो assessment में क्या होता है? There are the 4 steps. Like if you want to implant any project, if you want to start any project, then there are the 4 steps. So the site selection. After that, we have like जब भी हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो उसका साइट सिलेक्शन के बाद हमें वहाँ का कॉन्स देखना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं नेशनल पार्क के एरिया में कोल माइन स्टार्ट करती हूँ, तो वहाँ के प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो गवर्नमेंट देखेगी, एंड देन गवर्नमेंट आफ्टर दैट वहाँ का पीपी हियरिंग होगा, वहाँ पे लोकल लोग जो रहते हैं वो परमिशन देते हैं, एंड देन अलाउ करते हैं, क्लियरेंस मिलता है कि तुम वो जो प्रोजेक्ट है तुम्हारा वो स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये लॉ लेकिन अपनी कंट्री में इतना स्ट्रांगली इम्प्लीमेंटेड नहीं है. ठीक है. तो अभी रिसेंटली विशाखापट्टनम वाला जो हुआ था 2 महीने पहले लॉकडाउन में, विशाखापट्टनम में केमिकल इंडस्ट्री में गैस लीक हो गई थी, एंड जिससे बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए थे. उस कंपनी का क्लियरेंस नहीं मिला हुआ था. भोपाल गैस ट्रेजेडी इज वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें पीपल हियरिंग वाला स्टेप नहीं था. एक और केस में था आसाम में, ऑयल वेल पे आग लग गई थी जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग affected हुए थे. उसमें भी जो आईईए का जो है वो पूरा क्लियरेंस उन्हें नहीं मिला हुआ था. ओके. सो अभी आईईए 2020 क्या है, इन मार्च अभी लॉकडाउन के टाइम में हमारे गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है 8 पेजेस का. इसमें ना 5 मेजर प्रॉब्लम है. ये जो आईईए है लॉ, वो पावरफुल बनाने के बजाय उसको और वीक कर दिया है. ये 5 मेजर प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस. लाइक अभी जो आईईए 2020 ड्राफ्ट रिलीज किया है, उसमें पहला पॉइंट है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, जिसमें कि अगर मैं नेशनल पार्क को क्लियर करा के वहाँ पे मेरा कोल माइन स्टार्ट करती हूँ, तो वो कोल माइन मतलब मैं मेरा प्रोजेक्ट पहले स्टार्ट कर सकती हूँ और मैं क्लियरेंस के लिए बाद में स्टार्ट कर सकती हूँ. फैक्टो क्लियरेंस. You can start your project and then later on you can apply for clearance, which is wrong. Second thing is public hearing time जो है वो 20 days का कर दिया, पहले 30 days का था. मतलब अगर मैं किसी गांव में डैम बनाना चाहती हूँ, तो वहाँ के लोकल पब्लिक को आई थिंक ज्यादा टाइम देना चाहिए असेस करने के लिए कि उनका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है उस प्लांट का उनके लोकेलिटी पे, उनके फ्यूचर पे. ठीक है. गवर्नमेंट ने जो थर्ड जो अभी EIA 2020 जो रिलीज किया है, उसमें प्रॉब्लम ये है, अगर कोई कंपनी या फिर अगर कोई प्रोजेक्ट अगर एनवायरमेंटल लॉ को वायलेट करता है, तो पब्लिक उसमें जाकर गवर्नमेंट को कंप्लेन नहीं कर सकती. ओनली वायलेटर कैन गो एंड टेल टू द गवर्नमेंट कि मतलब एनवायरमेंटल लॉ के मैं अगेंस्ट कर रहा हूँ, बट कोई भी चोर नहीं बोलेगा कि मैंने चोरी की है. तो ये चीज एक गलत है. Ma'am, 1 minute to left. Yeah. Please just 1.5 minute more I require. Fourth point is national अभी ऐसा हो गया, पहले कुछ प्रोजेक्ट्स होते थे अगर कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड है तो उसकी डिटेल्स जो है वो पब्लिक में एक्सपोज नहीं करते. ठीक है. लेकिन अभी उन्होंने किया है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे कि वो स्टार्ट करेंगे जिसमें वो बोलेंगे कि ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, वो पब्लिक को नहीं बताएंगे. एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज इन द EIA 2020 इज कि लाइक पब्लिक हियरिंग का जो स्टेप रहता है, पब्लिक कंसल्टेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सम प्रोजेक्ट्स. लाइक जो बॉर्डर एरिया है अपने इंडिया का, वहाँ पे 100 किलोमीटर के अंदर कोई भी अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना रहा, तो वो पब्लिक का कंसल्टेशन नहीं लेंगे. इट मीन अपने इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है जहाँ पे 7 सिस्टर्स है, वहाँ पे कोई भी इम्प्लांट लगाना है तो पब्लिक कंसल्टेशन नहीं लेंगे. तो वहाँ के पार्ट का Time over. प्राइवेटाइजेशन इजीली. जस्ट 1 minute प्लीज. So, ma'am, please 1 minute.
तो अभी ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट थे, तो व्हाट इज आवर रोल? ये लॉ अब तक अप्लाई हुआ नहीं है, ये लॉ अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सो वी कैन, हाई कोर्ट ने मैम इसका ना डेट एक्सटेंड किया है 11 अगस्त तक कि पीपल कैन give their suggestion to the government. So I have made the mail, like people can mail, and from one mail we can do 2 messages. So a person can mail their suggestion to the government. So I would like to request you all, please put all this negative impact on to the government side, and I will post that mail ID and that suggestion message in our chat box. I hope you all got it. Thank you. Yes, we Thank got you it. so much. Okay, Ma'am, good. can I put We'll do that. mail? Ma'am, can I put that mail and Yes. that message? Okay, Yes, thank you, you can ma'am. put. Yeah. Good. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your words. This is very appreciated to all. Our next participant is Vishangi Taylor, ma'am, from final year, and her topic is purpose of life, and time is 5 minutes. Good afternoon, one and all present over here. So today's my topic is purpose of life. Before going to this attractive and sensible topic, purpose of life, I would like you all to question your own self that is the control of your life in your own hands, or have you given it to somebody else? Has this crown been given to somebody else which you are wearing? मतलब आपने अपना जो ताज है वो किसी और के सर पे दे दिया है, या फिर आपकी कंट्रोल जो है लाइफ की खुद की वो खुद आपके हाथों में है. So first of all, I would like to tell that control of our life and you should be the primary goal in your own life, and others like your parents, teachers, friends, colleagues, your close one, they should be the secondary. Next one, I would also like to tell that once the control of your life comes in your own hands, we should not allow anyone to belittle us, to degrade our potential, or to demean us. Once this control is in our hands, I also tell that every individual in this planet has their own potential, individual potential. सबको सबकी एक एक खूबी रहती है अपनी एक. इनबॉर्न टैलेंट्स रहते हैं, एक एक्स फैक्टर रहता है अपने खुद के अंदर. सो वो इंसान को पहचानने आना चाहिए. Certain things like the purpose of life, we make certain mistake. According to my own introspection, I would like to tell all the audience over here that while I express my topic on this, they should take this optimistically, and at the end of this, my aim is that they would be overwhelmed, and certain thing would be certain thing would be demonstrated by their own introspection after the end of it. So one common mistake which is done is that I like this thing and I should do this thing. ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है और यही चीज मुझे करनी चाहिए. This is the purpose of my life. So I would like to tell that this can lead to passion, not the purpose of life. Passion can eventually end into अब मेरे को ये चीज करने में कोई मन नहीं है. This kind of thing arises. Next, another common mistake which is done by people is that ये चीज सही है, मुझे ये चीज करनी चाहिए, यही चीज सही है, मेरे को लोगों ने बोला था कि ये चीज करो. This type of thing also is one of the common mistake done by the people, and it is an indirect influence of the others. मतलब आपने अपना खुद का ताज किसी और के सर पे दे ही दिया है. Your control of life is not in your own hands. So what is purpose of life in its own definition? It is that the things which occur to you naturally, which occurs to you with ease, जो चीज करने में तुम्हें आसानी होती है, जो चीज करने में तुम कभी बोर नहीं होगे, जो चीज मतलब बोल सकते हो कि ये मुझे नेचुरली आती है, ये चीज, ये एक इनबॉर्न होता है एंड एक एक्स फैक्टर होता है तुम लोग के अंदर. फॉर डूइंग दिस थिंग ना ही तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, ना ही तुम कंपटीशन में रहोगे, ना ही तुम जेलस या एनवियस फील करोगे अगर कोई तुमसे वो चीज अच्छे से कर लेता है, तुमसे भी अच्छे बढ़िया कर लेता है वो चीज. तो So my next point is that our soul is on a 1 minute left. Okay. Our soul is
in a journey, and it has experienced many past experiences, and it has carried many lessons with it. It has also carried some inborn talents, and so we can say that certain things occurs natural to me, certain things occurs natural to you also, which would not occur to me. So in also Bhagavad Gita, it is given in third chapter named Karma Yoga, that the selfless, do your deeds selflessly, do it selflessly without any selfish intentions, by which बोलते हैं ना कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत कर. This is the main motto of Bhagavad Gita. In third chapter, purpose of life is given in more details, but this is the main motto. And I would also like to end this speech by saying that purpose of life is that X factor, that own inborn talent which is present within you. Just introspect it, and it will be appearing in a moment. Okay, thank you. Thank you so much, ma'am, for your nice thought. Thank you so much. Our next participant is Kajal Popli from third year, and her topic is letter to grown-ups from Generation Z, and her time is 3 minutes. Hello everyone. My topic is a letter to grown-ups from our generation, that is the newest generation. People born from Ma'am, should I start? Yes, start, Kajal. Yes. A letter to grown-ups from a younger generation, that is the newest generation, Generation Z. People born from 1995 to 2010 are all in Generation Z. So this is a letter. Dear grown-ups, I am a member of Generation Z who is not a substandard version of yourself. Here's a letter for how I feel about you and how you can help me become the person you want me to become. I request to lay aside your judgments, move forward, acknowledging error without recoiling from us. Let you look past our flaws and imperfections to the elemental soul of the creature in front of you. I'm not asking you to completely ignore my shortcomings. I'm asking you to view me as a capable fellow human who sees the world differently than you do. I request you to not question my abilities. You might think we are too young to make a difference, or we don't know what, we don't understand what is really going on in this world. But listen, you might surprise. After all, an idea should not be invalidated by the age of its creator. You can't treat us like infants and tell us to behave like adults. Let us fail sometimes without freaking out. We are going to figure it out. We need security. We are scared about the future. We feel like the older generation doesn't trust us. We don't know if we trust ourselves. When we don't trust ourselves, when we feel unworthy, tell us that there are no circumstances which question our immeasurable worth. Tell us that there are no situations from which we will not come out happy. I request you to convert your suspicion into curiosity. When I screw up, don't say what were you thinking. Just say, dude, that's an epic wild thing you did. Tell me about it. Because we know we have screwed up. And we are already humiliated while we accept our state of mind. Do not break your heart against young people who disappoint you. When we fail, please be by our side in the dirt, planning for the next move because we don't want to give up. I plead you to not cry weak when I cry for help. Do not consider us to be attention-seeking when we simply ask for your direction. If suicide attempts among youngsters are doubled, it is not because they are degenerate, not because they are unworthy. They suicide because they are in a world they are rejected and judged completely. They are considered to be attention-seeking while their older ones are busy in their phone, ignoring the chaos built in the teen's mind.
I request you to not deny our feelings and our capabilities. We might be smarter, kinder, more grateful version than you are, but we are broken. Some of us are formed of patches through which the lights of humanity shine. And if that light is hidden, it is cloaked behind layers of adult manufactured issues. I request you to see into that curtain upon your young ones to who they really are and what they can become. Please embrace what you see and not flinch. I say, please embrace what you see and not flinch. Sincerely and respectfully, Generation Z. Thank you. Thank you so much, Kajal, for your beautiful words. Our next participant is Kiran Thakre from second year, and her topic is communication and time 3 minutes. Good evening all. My today's topic is about communication. I know की communication topic म्हटलं की हा खूप मोठा आहे आणि याच्यामध्ये खूप साऱ्या टर्म्स इन्क्लूड होतात. तर बोलायचं झालं हा खूप वास्ट टॉपिक आहे, पण आज मला सांगायचं की why we are scared of communicating with people and how we can overcome it. Okay. So communication is actually most important and it is basic life. It is our basic life skill. By communicating, we can share our information, we express our feelings, we express gratitude, happiness. Sometimes communicating with people gives us happiness, sometimes it makes us feel sad. But sometimes we can so far in our life that we prefer now communicating socially. Most of the times we communicate socially and our face-to-face communication is just so rare nowadays. So why is this so? कधी कधी असे भरपूर सारे लोक आपल्याला मिळतात ज्यांच्याशी आपण कम्युनिकेट करतो. आपले फ्रेंड्स, हॉस्टेल लाईफ, कॉलेजमध्ये खूप सारे लोक असतात, पण सेम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आपली सर्वांशी नाही जमत. तर का नाही जमत ती? तर ऍक्च्युअली आय थिंक समटाइम्स वी आर स्केअर्ड. Sometimes I think we are scared of our thoughts. We feel that someone will judge us, someone will misunderstood. आणि कधी कधी हे असं होतंय जेव्हा आपण कम्युनिकेशन आपलं नीट होत नाही तर आपलं मिसअंडरस्टँडिंग होतात लोकांमध्ये. पण आय थिंक आपण पण त्या लोकांची कंडिशन समजायला पाहिजे. बेसिकली लाईक इंट्रोवर्ट्स they are not good at expressing their feelings, they are not good at communicating verbally. Means त्यांचे वेज वेगळे असतात, ते कम्युनिकेट करतात, पण वी हॅव टू अंडरस्टँड की त्यांचं वे काय आहे आणि त्यांना काय पाहिजे. सो why we are scared? I think आपण घाबरलेलो असतो लोकांशी बोलायला कारण आपलं स्वतःशी कम्युनिकेशन कमी असतं. वी लॅक कम्युनिकेशन विथ अवर सेल्फ. आपल्याला जर सिच्युएशन ओव्हरकम करायची असेल तर मला असं वाटतं आधी आपण स्वतःशी कम्युनिकेट करायला पाहिजे की ऍक्च्युली आपल्याला काय प्रॉब्लेम होता त्या व्यक्तीशी बोलताना. कधी कधी समजू शकत नाही आपण की समोरचा व्यक्ती काय आपल्याविषयी विचार करतोय आणि आपण मिसअंडरस्टूड करतो की ती व्यक्ती काय विचार करते. सो याच्यामुळे समटाइम्स काही लोक हर्ट पण होऊ शकतात. तर मला सांगण्याचा हेतू हा आहे की मला लोकांना सांगायचं आहे की तुम्ही आधी स्वतःशी कम्युनिकेट करा की तुम्हाला काय प्रॉब्लेम होतोय. तुमचा तुम्ही प्रॉब्लेम ओव्हरकम केला की मग लोकांशी कम्युनिकेट करायला तुम्हाला तुम्ही नीट होईल, तुम्ही नीट कम्युनिकेट करू शकाल. सो आणि नो वन विल जज यू. ओके, सो ट्राय टू कम्युनिकेट विथ अदर्स. थँक्यू. Thank you so much, Kiran, for your own opinion about communication. Then our next participant. Ma'am, Revati. Then our next participant is Tulika Bhavankar ma'am, and her topic is Rishta and type limit is 4 minutes. गुड इवनिंग ऑल. मेरा टॉपिक है रिश्ता. एक सोल्जर का उसके परिवार के साथ जो रिश्ता होता है उसके बारे में. एक सोल्जर ये हमेशा कहता है कि या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊंगा या फिर मैं तिरंगे में लपेट कर आऊंगा, पर मैं घर वापस आऊंगा जरूर. तो बहन भाई के रिश्ते को एक राखी का धागा सजाता है. बहन भाई के रिश्ते को एक राखी का धागा सजाता है. राह देखते रह गई वो बहन,
राह देखते रह गई वो बहन जब उसका भाई तिरंगे में लपेट के घर आता है। जब उसका भाई तिरंगे में लपेट के घर आता है। बड़ी फक्र से एक पिता बताते हैं, बड़ी फक्र से एक पिता बताते हैं, मेरा बेटा देश की सेवा करता है। बड़ी फक्र से एक पिता बताते हैं, मेरा बेटा देश की सेवा करता है। जब बेटा तिरंगे में आता है, जब बेटा तिरंगे में आता है, नम आंखों से वो अपने बेटे को निहारते रहता है। 9 महीने पेट में रखने वाली वो माँ, 9 महीने पेट में रखने वाली वो माँ जब बेटे को देखती है, धन्य हुई मेरी कोख मेरे लाल, धन्य हुई मेरी कोख मेरे लाल तुझे पैदा कर, रोते रोते वो ये कहती है। जन्म साथ रहेंगे ये वादा, जन्म साथ रहेंगे ये वादा जब एक पत्नी टूटता देखती है। जन्म साथ रहेंगे ये वादा जब एक पत्नी टूटता देखती है। तेरी यादों से मैं रहूंगी जिंदा, तेरी यादों से मैं रहूंगी जिंदा, ये जय हिंद कहकर वो बोलती है। पापा की राजकुमारी जब पिता को तिरंगे में देखती है, पापा की राजकुमारी जब पिता को तिरंगे में देखती है, खिलौना नहीं चाहिए पापा, खिलौना नहीं चाहिए पापा, बस आप आ जाओ ये कहती है। तिरंगे में देख एक बेटा अपने पिता को कहता है, तिरंगे में देख एक बेटा अपने पिता को कहता है, देश की सेवा कर, देश की सेवा कर, आपके राह पे चलूंगा, ये वादा वो उनसे करता है, ये वादा वो उनसे करता है। जय हिंद। थैंक यू। Thank you so much, Tulika ma'am, for sharing your precious word regarding the rishta of soldier towards their family. The next participant is Payal Rajput from first year BPTH regarding mental health awareness. Good afternoon, everyone. I am Payal Rajput from first year. I am here to represent the topic mental health awareness. So, first of all, I would like to tell you what exactly the mental health is. Mental health is nothing but the emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. It also helps determine how we handle stress, relate to others, and make choices. Mental health is important at every stage of life, from childhood and adolescence to adulthood. Over the course of your life, if you experience mental health problems, your thinking, mood, and behavior could be affected. Many factors contribute to mental health problems, including biological factors such as genes or brain chemistry, life experiences such as trauma or abuse, family history of mental health problems, and whatnot. Depression, that word we throw around so easily nowadays, that we use to describe anything from a bad day to an overwhelming inability to live life. But as anyone with depression knows, it is much more than any word one can describe. Let's understand depression with the poetry. Am I audible? Okay. So, depression is a monster that destroys both heart and soul. It tortures without a mercy and consumes its victim whole. It cripples and disables, making life too hard to cope. It can make each day a nightmare and leave a person without a hope. Some people feel this sadness from the time that they are young and believe that they are different and can't be loved by anyone. It's reinforced by parents to depress themselves to care. For that child, they are supposed to love, but instead forget is there. Depression can be nurtured through violence and neglect, and fists used only to degrade and words used to reject. It's hidden in those bullies who torture and demean, who use their words like weapons to destroy all self-esteem. It's fueled by those substances that are used to help escape from that endless pain depression brings and that unbearable heartache. It can cause someone to just give up, to lose all strength to fight. It can annihilate one's very soul and make them their life. Yes, depression is a vulture that will make anyone its prey. There is no one who deserves it and there is no one to blame. We don't need to make a judgment, but we need to be aware
that those who suffer from this pain just need the world to care. It's very important to deal with these problems. Many people who are in depression think suicide is the only option to get rid of it. But several options are there to cope with it, like take a different view, visualize a happy memory, make plans, find something to look forward to. According to me, communication with our loved ones is the best therapy over all those mental issues. Life is to enjoy with whatever you have with you. If you feel stressed, give you a break. One good friend is equal to one good medicine. Likewise, one good group is equal to full medical store. If you see the moon, you see the beauty of God. If you see the sun, you see the power of God. And if you see the mirror, you see the best creation of God. So believe in yourself. Thank you. Thank you so much, Payal, for sharing your words. The next participant is Dr. Rudali ma'am from first year PG, Department of Community Medicine. So, am I audible to all? Yes, ma'am. Hello. गुड आफ्टरनून ऑल. तर मी आज आपल्या आयुष्याविषयी काही थोडं बोलणार आहे. म्हणजे माझं मत मी सांगू इच्छिते आज. तर अडचणी ह्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये येतात. तर मग त्या अडचणींवर रडत बसणे किंवा काही सोल्युशन नाहीये हे असं करत आपला टाइम वेस्ट करणे यामध्ये अर्थ नाही. आज मी तुम्हाला 2 टिप्स देणार. त्यामध्ये एक आनंदी आयुष्य जगण्यासाठी आपण काय करायला हवे, की रडत बसणे इट्स नॉट दी सोल्युशन. तर आपली ध्येय गाठण्यासाठी आपण सतत प्रयत्न करत राहायला हवे. गेलेला क्षण परत येत नाही, त्यामुळे आपण सतत प्रयत्न करायला हवे. ती पहिली गोष्ट म्हणजे या जगामध्ये कुणीच कुणाचं नसतं. त्यामुळे पहिला मंत्र म्हणजे अपेक्षा. कुणाकडून कुठल्याही गोष्टीची अपेक्षा न ठेवणे. जेवढी तुम्ही अपेक्षा ठेवताल कुणाकडून की ही व्यक्ती माझ्यासाठी ही गोष्ट करेल, तेवढी जास्त तुम्ही हर्ट होतात. सेकंड थिंग म्हणजे तुम्हाला एक मी सुंदर उदाहरण देते. कोणीतरी बर्फाला विचारले की आपण एवढे थंड कसे, तर बर्फाने खूप छान उत्तर दिले की माझा भूतकाळ ही पाणी आणि माझा भविष्यकाळ ही पाणीच आहे, तर मी कुठल्या गोष्टीवर गरम होऊ. म्हणजे तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये येणारी कुठलीही व्यक्ती असू द्या, त्या व्यक्तीला क्षमा करण्याचा आपल्यामध्ये ताकद असली ना तर सर्व गोष्टी सोप्या होऊन जातात. फॉरगिव्हनेस म्हणजे कुठलीही गोष्ट असू द्या, आपण क्षमा करायला हवी. कारण की आयुष्य खूप सुंदर आहे. एकमेकांना समजून घ्यायला हवं, एकमेकांना तुम्ही जीव लावायला हवा. त्यानंतर एवढं सांगते मी की कवी सुरेश भट बोलतात की आयुष्य छान आहे, थोडे लहान आहे. त्यानंतर रडतोस काय वेड्या, लढण्यात शान आहे. काट्यात फुलांची झुलती कमान आहे. उचलून घे हवे ते दुनिया दुकान आहे. जगणे निरर्थक म्हणतो तो बेईमान आहे. सुखासाठी कधी हसावं लागतं तर कधी रडावं लागतं. कारण सुंदर धबधबा बनायला पाण्यालाही उंचावरून पडायला लागतं. थँक्यू सो मच. Thank you, Rudali ma'am, for sharing their words. Then I would like to thank Ganvir ma'am for giving us opportunity to organize the student club event. This event is really helpful to for increasing our confidence in social level. Then I will also thankful to all the participants for their coordination and sharing their opinion. Then I'm also thankful for our principal sir who motivates and support us for this event. Thank you so much. Okay, thank you all. Nicely organized, nicely arranged. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. मॅम गेल्या ना, चला जाऊ.